बात है। अभी क्या चल रहा है बेल्स ऑफ? कैसे है भाई आप? हाँ भाई, कैसे कहाँ चल रहा है? गायब थे तुम लोग यार? मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो गया। हम तो क्रिकेट खेल रहे थे, आप क्या कर रहे थे? क्रिकेट? क्रिकेट चल इतनी रही थी। क्रिकेट ना खेलो। अच्छा तो यार बेल्स ऑफ आफ्टर नाइट अ वेरी टूर्नामेंट चल रहा है, लॉन्ग बड़ा ब्रेक। जबरदस्त चल रहा है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में आप? ऑर्गेनाइजर अतीक से पूछते हैं। मैं क्या बोलूं भाई, अब सही चल रहा है फिलहाल तो। यार हमें पूरा सैन एंटोनियो, मुझे लगता है कि मतलब सैन एंटोनियो में एक आप लहर फैमिली फैल गई वाइब, क्रिकेट की। एक हल्ला मचाया हुआ आप लोग ने, इतने मतलब लोग कहाँ से निकल आएंगे, मुझे तो ये नहीं समझ आया। हाँ, मुझे खुद समझ नहीं आया। लेकिन अब फाइनल प्ले ऑफ वीक्स आ रहे हैं बट तो अच्छा है, लाइक मतलब हम जो सोच रहे थे हम लोग वही है कि यार यहाँ पे हैं टीम्स हैं कि नहीं है, लड़के हैं कि नहीं है, वो आपने टूर्नामेंट कराया तो आपको पता ज्यादा है, लगा। जरूरत से ज्यादा ज़रूरत से ज़्यादा है, मैनेज करना जो है ना वो, और आपको और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बड़ी करने की अब जरूरत मैं है। सोच रहा हूँ क्रिकेट छोड़नी पड़ेगी, ऑर्गेनाइज करना हाँ। पड़ेगा। मैं तो कसम से, मैं तो खेलने का मेरे दिमाग बैंड में आता था कि अच्छा खेलना भी है। हाँ आई थिंक इतना अच्छा अभी तक नाइट क्रिकेट के अंदर टेप बॉल में अभी तक इतना अच्छा टूर्नामेंट कोई ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। No, and this is actually really good. I feel like families are coming out. There has been what we've had days with almost 8 teams, all of them on the ground. Basically, that place on Saturday evenings is just cricket, you Yeah. know, because his fields are booked और बीच की हाँ जगह पे सारा हो रहा है, crowd is cricket. बच्चे खेल रहे हैं, फैमिलीज हैं, खाना पीना हो पिकल रहा बॉल हो है। रही है, रैकेट Yeah. बॉल हो रही है। Yeah, so it's So यार week it's a good 1 thing. started off with an upset. Stallions or what was the name of the other team? Falcons. Falcons. और Stallions went in as hot favorites. Upset तो मैच को बोल रहे हो minus या 300 odds. और या- Falcons थे वो ये- plus या- 300 odds पे underdogs थे। ups- और उस मैच में बड़ी पैड़ी हुई है, क्या हुआ क्या उसमें? आप बताएंगे मुझे, मैं भाई तो उसमें था नहीं। मैं तो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि हमारे एक हैं अजीम शान बॉलर, उन्होंने अजीमो शाह शहनशाह। उन्होंने 5 बॉलों में 25 रन दिए और उसमें कोई 15 बॉलों का वो ओवर था इवेंचुअली। वहाँ पे मैच यार पलट देखो, गया। मैं उसका साइड लूंगा, तुम लोग उस बेचारे को जो है आप ना सुबह से फूकना शुरू करते हो। उस कर रहे हो, बंदा कौन है? हाँ यार, एवरीबॉडी नोज, विक्की एवरीबॉडी Oh my नोज। God. उस बच्चे को बेचारे को पहले सुबह 6 बजे उठाते हो, उसको पूरा शहर घुमाते हो, ये पिक कर, वो पिक कर, ये कर, बॉल टेप कर, विकेटें ला, बेल्स तो ला। तुम्हारा ख्याल है कि फिर वो थकावट नेट्स इसकी में वजह 1 घंटा सबको बैटिंग कराता है वो, ठीक है, बॉलिंग करा करा के, मतलब जब तक वो एक्चुअल मैच में पहुंचता है ना वो खत्म हो से चुका खत्म हो होता है। चुका था आदमी। मतलब वो बेचारा बॉल फेंक रहा था, बॉल ऊपर जाके नेट पे लग रही थी पीछे कीपर के सर के। Anyway, so that game ended up with a draw. हाँ, and, आखिरी बॉल पे highlight was Kaleem Shah कलीम six on the शाह ने last छक्का ball. मार दिया आखिरी बॉल पे 7 रन चाहिए थे जीतने के लिए, ज़ाहिर है छक्का वाज अ ड्रॉ एंड ही हिट इट। चलो that was उसके good. अंदर आप थोड़ा क्रेडिट जो है वो ज़ाहिर है कलीम शाह को भी थोड़ा नहीं, देंगे। काफी क्रेडिट थोड़ा देगा। नहीं, आखिरी बॉल पे छक्का मारना last- जो मर्जी हो, बड़ा काम है भाई। You can't keeping your just hit a nerves six. and like Yeah. connecting it, and it was a पर उसके proper अंदर shot. थोड़ा सा आपको पता है कि अंपायरिंग कभी हुआ था नबील। हाँ, that's true. So I wasn't at the game, but I looked at the video, and Kaleem Shah was run out on the third last ball. यार I mean yeah, I agree, लेकिन उस वक्त in the moment for the umpire it's hard to judge. Again वही बात है कि मेन umpires हम स्कोरिंग भी करा रहे होते हैं, which we are not doing anymore because Yeah. it's impossible कि अगर उसने स्कोरिंग करनी है तो इतनी क्लोज चीज़ों को भी मॉनिटर करे। But brings me to the So- point कि जो आप उस गेम में भी डेमोस्ट्रेट किया कि he did point out, Rashid noticed कि Kaleem Shah should have been out, and he did say कि यार ये he was close to the stumps on that side, they hadn't crossed, तो run out ये बंदा होना चाहिए. Nabil said he doesn't know the rule, whatever, right? But he agreed with it, and we moved on. Yeah. So that's what we kind of need to nail in कि भाई देखो umpire जो है वो हाँ। perfect नहीं है, but if an umpire is given a decision, it's okay to ask a question. It's okay for the umpire to check with the leg umpire and see कि यार अच्छा कोई confusion तो नहीं है. But if they still insist कि यार we've given a decision, we're going to stick to it, then just take it and move on. ये जो है ना कि argue करते जाना और- Only what is okay is you can request कि यार umpires मतलब आप दोनों discuss कर लो हाँ. आपस में, like like give it a thought. That's it. I Yeah. mean after they discuss think- and they give a decision, that's final. Yeah. No arguments. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि अगर आपको कोई चीज़ थोड़ी सी क्वेश्चनेबल लग भी रही है ना तो कैप्टन शुड अप्रोच इट एंड कैप्टन अगर सेटिस्फाइड है विद अंपायर्स एक्सप्लेनेशन, गेम ऑन, आप यू मूव ऑन फ्रॉम द गेम। Yeah. अब आगे चलते हैं भाई, मेरे ख्याल से एक मैच तो डिस्कस हो गया। Austin lost their first game. Austin actually played 3 games in a row. I mean actually दूसरा गेम उनका हुआ नहीं क्योंकि it was a walkover. Yeah. So Which I think it was good for Austin. It was a क्योंकि- walkover. क्योंकि वरना Hawks would have given them a tough time. Yeah, हाँ. Hawks seems like a really good team. हाँ, तो हॉक्स ने एक्चुअली हॉक्स एक्चुअली कुड हैव बीटन ऑस्टिन अगर वो वहाँ होते, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप माजिद से बात करें तो माजिद कह रहा था कि हमने स्ट्राइकर्स को भी हरा देना था, हमने खुद उनको गेम दिया है। क्यों? माजिद मतलब इतनी अब ये- philanthropy के मोड में क्यों आया हुआ था? माजिद ये बेसिकली कह रहा था कि हमारी जो
खुद वो हमने खुद गेम दी का कहते मतलब कि ये है कि हैद- हमसे ली नहीं गई बेसिकली वो कह रहा था कि हम हमारे 3 बंदों के बाद जो है ना वो खुशदिल शाह और हैदर अली आ गए थे बैटिंग पे, जो इन्होंने कुछ रन नहीं किए, और बॉलिंग के अंदर हमारे पास जो है वो आ गए थे स्टीवर्ट ब्रॉड। नहीं उधर भी वो आई फील उनका लाइक मसला है। शफीक played really well. He हाँ, I carried mean, the game to the end. He was there the whole time. Timed that chase perfectly. और मतलब बड़ा convincingly वो game जीते थे. It wasn't a close call. भाई शफीक इज एन एक्सपीरियंस प्लेयर, he मतलब यू knows नो how लाइक to hold his ही own. डजंट गिव हिज विकेट अवे, Yeah. मतलब यू हैव टू, आई मीन हॉक्स का जो गेम मैंने एम्पायर किया था सेकंड डे फर्स्ट गेम, लाइक he gave a few chances but first they had to like frustrate him. Yeah. If you give him runs he's going to keep scoring single double. Unless it's like you know one of those totals where you're trying to chase something over 100. If he's there, you always have a chance because he knows how to navigate thoda pressure and keep the run rate up and all of that. Austin won their last game pretty convincingly. Majid scored like 70 something. Oh, Majid to got बहुत जबरदस्त था वो. went berserk. What else was that's there? probably the highest score we ever Had single. single person scores में तो this is The how highest do you ever. score more than 70 in, हाँ, in 70 like और टीम 50 ही नहीं बना balls? रही यहाँ पे, तो एक 70 बंदा ने बना दी। तो बेसिकली उसी का स्कोर था सारा. हाँ, बाकी मतलब तो उन्होंने सारे टोटल बस 100 रन बनाए थे, मेरे ख्याल से वो हाँ. 70 उसके थे। हाँ, बाकी कुछ वाइड होंगे तो ऑस्टिन अब जरा बैटिंग प्रैक्टिस करे. ऑस्टिन में ये है कि यार आप देखें ऑस्टिन के अंदर है ना, अब हमने इन लड़कों के साथ काफ़ी खेला हुआ है, ठीक है, हमें पता है यार, मतलब आप स्कोर कार्ड उठा के देखें, सच अ डिसअपॉइंटमेंट, ना. मतलब आप स्कोर कार्ड पे लिखा हुआ है कि डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है ना। आप देखें, मतलब माजिद के अलावा कोई रन किसकी ही नहीं बात है, कर रहे हो? मतलब आप देख, आसिम है, तला है, ठीक है, अदील भाई हैं, और अपना है यार अदील भाई का तो गेम होना चाहिए, सिंगल डबल दुक्कियां शुक्कियां. सिंगल डबल वाला ये गेम नहीं है और अदील छक्के मारता है बाय द वे टेप नहीं मेरा कह रहा हूँ, लेकिन मतलब वो यार इसके अंदर एक रीजन छक्का ये से भी straight है ना आपके एक पास. एक रीजन ये भी है कि वो लोग पहली दफा ये 3 घंटे का ट्रैवल वाला सीन करके आए थे. आई थिंक वो दैट प्लेज अ ह्यूज पार्ट. आई थिंक इस हफ्ते वो प्रैक्टिस तैयारी कर आएंगे. थोड़ा सा उनको जगह का आइडिया हो गया. ठीक है, द फर्स्ट गेम दे लॉस्ट, दैट्स फाइन. द सेकंड गेम दे केम बैक रियली स्ट्रांग. दे ओनली प्लेड वन डे, राइट. द सेकंड मैंने गेम न्यूज़ में देखा था काफी स्ट्रेटजी वगैरह बना रहे हैं वो लोग. न्यूज़ में हमारे पास थोड़ी लीक्स आती हैं, दैट्स ट्रू. लेकिन आई थिंक नाउ दैट दे नो द ग्राउंड, they'll get a feel of how that travel goes. They'll शुक्र probably करो be there a आसिम little नहीं early. चला. आसिम चल गया ना तो वो आज मिल गया, it's game over. बाहर Asim उड़ was के like, बाहर जाएंगी Asim was बॉलिंग. like Taimur Mirza. ठीक है, if he works out, ना उसने वो तो is सिर्फ done. मारता ही छक्के भाई, हाँ, चौके तो वो- मारता ही नहीं, अटेम्प्ट बस ही नहीं आसिम ने करता बॉलिंग कैसे करेंगे? आसिम की बॉलिंग भी यहाँ चलनी चाहिए बिकॉज़ आसिम की ही बॉलिंग मैंने देखी नहीं. मैंने तला की Shot बॉलिंग देखी थी मारता है. और तला मैंने कहा था ना कि फोर्ट तला आएगा या फरारी तला आएगा, और तला जो था ना वो वोक्सवैगन वाला आया था. ठीक है, तो वो बिल्कुल गैस चलो, गैस एटलीस्ट कम थी. ऑस्टिन एटलीस्ट वॉन 2 गेम्स, भले चलो एक वॉक ओवर था, लेकिन they went तो ahead. अच्छा अब लेट्स वॉक थ्रू द गेम्स ऑन सैटरडे. तो फर्स्ट 2 गेम्स आर व्हाट? So first week में Stallions versus what was Suri's team's name? Night Warriors. Night Warriors. We won that game. इतना कोई close भी नहीं गया था. हाँ, नहीं, I think we won by 35 runs. I mean, हाँ, we and I think batted that was their first game. Yeah. But वो उसमें भी, you know, because they're playing with tape ball for the first time. This was a little new for them. But उसमें भी उनके एक दो batsmen थे There were जिन्होंने पकड़ लिया. glimpses of, you know, them because they getting got it. their eye set and मतलब But वो second week I think they played better. second में they played better. So they've gotten a sense of like the tape ball thing, and I think as we go forward, क्योंकि उनके batsmen अच्छे हैं, so that's gonna start to show. Second week. I think second week के अंदर you know, clearly हमारे पास तो भाई एक ही गेम था, हमें सिर्फ कलंदर से अगेंस्ट खेलना था, लेकिन जो उससे पहले गेम हुए they were important. Obviously Hawks were playing their 2 games, and Night Warriors were playing their 2 games, and Night Riders were also playing 2 games. So it was a lot of you know, uncertainty कि कौन finish करेगा, but at the end I feel like हॉक्स ने you know overall अच्छा खेला. हॉक्स से पहले गेम तो जीता ना अपना उन्होंने उससे. स्ट्राइकर्स को हरा दिया. Strikers. अच्छा, actually I was watching the Hawks game and Hawks and striker. strikers जो थे they were मैं तो अंपायर chasing कर it. रहा था. I mean I liked that. I was watching it on the live feed or I was driving in, right? थोड़ी सी मैंने उनको स्ट्रेटेजिक टिप्स दी दी थी. थी तुमने? क्योंकि I was watching strikers was actually winning that game really convincingly. Striker needed like 20 runs and 30 balls, and then they had a full collapse हुआ उनका. और एंड में भी even I remember Asif was playing, 2 बॉलों पे 4 रन चाहिए थे और उसने सिंगल ले लिया. और ऐसा कह रही तो सुसाइडल किस्म की हरकत की है. मतलब आपके पास एक बंदा खड़ा है जो मतलब he is a proper batsman. And all they आसिफ needed was थोड़ा a 4. अभी तक टूर्नामेंट में वो चल रहा है, जरा एक्सप्रेस नहीं कर पाया. I think वो नई टीम के साथ सेटल इन हो रहे हैं, थोड़ा सा वो भी एक इशू होता है हमेशा, because you know you have so many new people, you're trying to figure out what your bowling में that dynamic day is. the ground was wet, so he really didn't have any control. He हाँ, bowled a that's lot of true. wides, went for a few went for a lot of sixes. runs. Went for a lot of runs. And that's Actually his over was where they actually scored and, you know, came Yeah. up to speed. And then I think इनका जो last game था Night Riders का,
स्ट्राइकर्स के साथ. I think very low scoring game. I think उन्होंने first batting करते हुए स्ट्राइकर्स ने not even 70 run बनाए और they defended it. I mean, I don't know what happened, but obviously that game was that should have been won by Knight Riders. I mean 70 odd chase करना is like you're almost run a ball. Yeah. So or I mean I know that strikers की bowling decent है, but ऐसी I think even probably the best bowling attack in the team is hard to defend 70 runs. Yeah, 70 is pretty chaseable. मतलब you're basically going like 7 runs every 5 balls. 4-5 बॉल है तो आप वैसे ही आप easy दे देते हैं 50 में से. Stallions की तो एक ही game थी. That was the last game with Qalandars. That was also the hardest game we had thought we were gonna have क्योंकि नबील की team जो है ना वो basically ज़्यादा stacked है. हाँ. So that turned out pretty good as well. I think they just lost like wickets very regularly. So they just never I could. think wickets भी lose करी. I think उन्होंने bowling अच्छी कराई थी लेकिन I think वो आखिर में उनको last over में काफी रन पड़ गया था. I think that kind of like pushed the score up. Our score was slightly above par, but they could have chased it. They had a lot of hitting, but I think bowling के अंदर I mean full credit to AZ. AZ ने अच्छी bowling AZ करी. was- AZ ने अच्छी bowling करी. वकास ने भी अच्छी करी. Waqas का भी फराज ने comeback भी over अच्छी- was very good. Waqas Yeah. was So I think everybody bowled well, and I think that's the reason they I mean chasing the score. I think after I think second over they were never in the game. उनके 2 विकेटें भी गिर गई थी और शहजादा आउट हो गया था, नबील आउट हो गया था फिर, and I think they just couldn't come back. Suri's team played really well too. उनकी जो एक game मैंने देखी थी, they did really well. वो Suri जीते थे. played against which team? One of the Knights. भाई एक तो Night- उन्होंने एक तो उन्होंने फैल्कन्स के अगेंस्ट खेला था जो जीता. Falcons. Yeah. हाँ फैल्कन के अगेंस्ट जीते थे और दूसरा जो था उनका था इनके अगेंस्ट कलंदर्स के अगेंस्ट. सो Qalandars वाला तो वो हार गया था. कलंदर वाला वो हार गए थे So लेकिन between Qalandars and Stallions, if they had won, they would have gone to the. हाँ हाँ I क्योंकि mean, वो क्योंकि दो हम- जीते हुए थे और they actually had a अगर वो जीत जाते वो सिंपल they won all 3 Yeah. games. हमने तो एक ड्रॉ किया. yeah. But at the end of the day, I think that was fantastic. I think last 2 weeks बड़े ज़बरदस्त गए. अब जो इस तरह से जो आपका प्ले ऑफ स्ट्रक्चर है उसके अंदर भाई सीडिंग आपने देख ली है तकरीबन सब लोगों ने पता चल गया होगा. स्टैलियंस आर नंबर 1 सीड, स्ट्राइकर्स आर नंबर 2 सीड, कलंदर्स आर नंबर 3 एंड ऑस्टिन इज नंबर 4. सो these are top 4 टीम्स. नीचे वाले जो हैं वो सारे आपस में एलिमिनेटर खेल रहे हैं. उनमें से जो जीतेगा वो आके अगले उसमें क्वार्टर फाइनल्स खेलेंगे एंड देन सेमीफाइनल एंड देन फाइनल. So first games on each ground are eliminator for the Yes. bottom 4. So you'll Yes. get 2 teams from that, and then the second games are what with the eliminator. क्वार्टर There फाइनल is an eliminator. So basically a quarter final. क्वार्टर फाइनल क्वार्टर फाइनल के अंदर ऑस्टिन एक साइड पे, कलंदर है दूसरी साइड पे. स्ट्राइकर्स एंड स्टैलियंस आर ऑलरेडी इन सेमीफाइनल. सो जो भी एलिमिनेटर्स जीत के आएगा दे आर ईदर गोना प्ले ऑस्टिन और दे गोना प्ले कलंदर्स, डिपेंड ऑन कि which team wins and what their rankings are. Okay. So winners of both the eliminators will play number 3, number 4. Yeah. And that's how you will get your Semi spot. semi spot. Yeah, so you'll establish new number 3 and number 4. Hmm. And then you go into the semi-finals, which already we have strikers on one side and stallions on the other. So जो भी वो जीतेगा, obviously that'll be the final game. Yeah, so it's So basically every team is in. yeah, for the every team has If a you good, win yeah, even if you're bottom, if you win everything on that day, Yeah, you're through. you're through the final. good opportunity for any team to go all the way. I mean eliminator से start करके भी you can win the whole tournament in a day. Yeah, But You 4 games, you need Yeah, to win 4 games in a row. yeah, that's a which is- little tricky. So Yeah. on the Tricky, last day basically. to get through like 4 teams and then increasing difficulty as you go up, right? That's Yeah. the challenge. Hmm. So bas like yeah, okay, if you end up on the thing as the last team, then that's what you got to do to win. I think that's pretty much it. I mean, I think few things for the people that are listening, especially यही है कि भाई all games are going to start on time. Make sure that all your players are in proper gear, which means wearing same colored shirts and wearing trousers. Games are all going to be monitored very closely by the match referees and umpires for any kind of disciplinary issues. Umpires definitely needs to be a little bit more stricter in managing the time and discipline on the ground. कुछ चीज़ें हैं जो कि कैप्टन्स को ऑलरेडी कन्वे कर दी गई हैं. So just make sure that your teams are following everything and hopefully the best team wins and we are The hoping for the idea best is tournament. the idea is for this week to be fun, right? We want this to end up on a high note. We have some trophies and stuff that we want to give out. उसमें
आपके बैट्समैन हैं, फील्डर्स हैं, इन Oh yeah, सबके लिए वो trophies. है. Let's go through that. So we have winners and runner-up trophy. We Yeah, have medals for the winner and runner-up team. yeah. Correct. And what other? We're doing Batter, best bowler, MVP. batsman, best bowler, Yeah, MVP MVP, of the tournament, best fielder. best fielder. That's basically it. That's the main. Yeah. Are we those doing the like main an things. emerging player or something? Emerging player का भी हमने सोचा था. I think we're gonna do something. I think we like should that. do it. Like, you know, one Yeah. of the young guys. Yeah, well, there is a conflict between the emerging player and actually there is an emerging player award. That's true. We thought about that. That yeah, is in so there. we'll do that. So we'll do that as well. So yeah, Anyways, everybody just play in good spirit. You know, let's show sportsman spirit. Have a good night of cricket, and you know, again, discipline and timeliness. Yeah, is try to important. keep it fun. I know everybody's trying to win, but try to keep it fun. There's a lot of families around, so everybody should restrain from any sort of the over aggressive behavior. argumentative behavior जो है ना, मतलब that's the whole point of having neutral umpires. Nobody cares. Yeah. Right? They're trying to make the games go smoothly. Obviously, yeah. And again, you this is going so well. The only way to continue this is if this continues to go well, the facility is happy with us. I mean, if we do anything, any sort of issue gets created, the facility is probably not going to want to Yeah. have us. चलो यार, let's see how the last weekend turns out. May the best team Trophy तो मेरे पास है, मैं नहीं दे रहा वापस. bails off. Bails off.